नमस्कार सर। नमस्कार। और क्या हाल है साहब? बस ठीक हूँ सर, आपका आशीर्वाद है सर। आर्टिकल 19 इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, है ना? डेफिनेटली सर। सब कुछ इसी में डिपेंड करता है। आर्टिकल 19 से 21 से 22 तक तो बिल्कुल दैट इज द हार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एटलीस्ट, है ना? Exactly sir, that's the fulcrum on which the entire constitution rests sort of. हाँ, अगर और इसको दर्शकों को बता देते हैं कि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में ये सारे के सारे 12 से लेकर के और 35 तक इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बनाया था। मतलब जवाहरलाल नेहरू इतना स्मार्ट था कि उसने इनको दे दिया था कि भाई तुम ले लो इसको, और अगर कुछ गाली पड़ेगी तुम्हारे को पड़ेगी। ये भी बात सही है सर। थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में जाते हैं विकिपीडिया से, देखते हैं क्या बोलता है, और अगर हो सकेगा तो इसके केसेस भी कवर करेंगे। मेनका गांधी इज इम्पोर्टेंट केस ऑफ दिस। इसके अलावा 2-4 केस और भी है, अगर आपको कुछ याद हो बता देना। हाँ, मैं भी बोल दूंगा कुछ। ये है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। जी जी, असल में 19 में सर ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स है। हाँ है, तो हम लोग पहले वाला लेते हैं। तो मैं इसको ले लेते हैं। जी, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसी को पहले लेते हैं। दूसरा ले लेता हूँ, उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएंगे। ये सिर्फ फ्रीडम एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, तो हम इसको लेते हैं। ये क्या बोलता है? आई होप ये बंदा बराबर लिख रहा हो। वो हम लोग फिर अपना देख लेंगे ना। हाँ, यही मैं बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, ये सारे सब आर्टिकल्स दिए हुए हैं उसमें। हाँ, तो आर्टिकल 19 starts with all citizens have the right to A, freedom of speech and expression, to assemble peacefully and without arms, to form associations or unions, to move freely throughout the territory of India, to reside and settle in any part of the territory of India, and F is omitted by the 44th Amendment Act. तो ए से ई तक ही। अच्छा, ये एक और है जो जी जो है, टू प्रैक्टिस, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और बिजनेस इन इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी जी जी। तो 19(1)A एंड 19(1)G इज वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी तो सब चलता है कि जो यूनियन बनती है उसके बारे में है। कहीं पर भी आप रह सकते हो। अभी तो पता नहीं जम्मू कश्मीर के लिए वो किया कि नहीं किया। टू रेसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शन बोलेगा। नथिंग क्या बोल रहे हैं, ये पढ़ो। Nothing in the subclause A of clause 1 shall affect the operation of any existing law or prevent the state from making any law insofar as such law imposes reasonable restrictions on the exercise of the right conferred by the said subclause in the interests of the sovereignty and integrity of India, the security of the state, friendly relations with foreign states. This is a very slippery slope. फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, इसके नाम पे बहुत कुछ मतलब गड़बड़ किया जाता है। पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, और इन रिलेशन टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफमेशन और इंसाइटमेंट ऑफ टू एन ऑफेंस। तो मतलब कुछ भी बकवास नहीं कर सकते। यू हैव टू स्पीक इन अ प्रॉपर वे, लाइक, है ना? नहीं तो सर, ये जैसे आप कुछ जानना चाहते हो तो दे विल इमीडिएटली से कि नो नो, दिस राइट इज रिस्ट्रिक्टेड बिकॉज दिस विल अफेक्ट फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स। उसी के नाम पर तो सबको डूबो रहा है। नहीं, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट में भी तो कर देते हैं ना उसको कि हाँ, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट तो जनरल, किसी जो ट्विटर में या कहीं पर भी कोई लिख देता है तो उसको उठा के फेंक डाल देते हैं वो सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। जी 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 सर, जी सर।
थर्ड क्या है? तीसरा, नथिंग इन Third, nothing in the sub clause B of the said clause shall affect the operation of any existing law, insofar as it imposes or prevents the state from making any law imposing in the interests of the सेम चीज, सेम चीज, sovereignty and सेम चीज, integrity सेम चीज। of India, public order, reasonable restrictions on the exercise of right conferred by the said sub clause. फिर बोल रहा nothing in sub clause C of the said clause Viewers, please shall note affect. that all these 2, 3, 4 are starting with nothing. मतलब they are exception. These exceptions prove to be a roadblock in certain cases. पूरा पूरा रगड़ दिया है ना, सब कुछ कितने हैं? हाँ 6 है, 7 ऊपर देखो, वहां पर कितने हैं? 6 है ना। अगर जी जी एफ को निकाल दो, जी तक है तो सारे के सारे ए 6 बी है। सी बी ई और जी, एफ तो निकाल दिया, तो 6 के 6 रिस्ट्रिक्शन मार दिए नीचे। हाँ तो उसमें फिर फायदा क्या हुआ? मतलब लोग ये क्वेश्चन विल नेचुरली अराइज इन द माइंड्स ऑफ द व्यूअर्स दैट यदि एक लाइन में जनरल क्लॉज लिखा जा रहा है उसमें फिर ये जो प्रोविशियो टू दैट क्लॉज दैट इज आल्सो एक्टिंग एज अ deterrent. 6 पढ़ो तो क्या बोलता है? 6 में नथिंग इन Nothing in the दिस। subclause G of the said clause shall affect the operation of any existing law insofar as it imposes or prevents the state from making a law imposing in the interests of the general public reasonable restrictions on the exercise of the right conferred in the said subclause. And in particular, nothing in the said subclause shall affect the operation of any existing law insofar as it relates to or prevents the state from making any law relating to the professional or technical qualifications necessary for practicing any profession or carrying out any occupation, trade, or business, or the carrying on by the state or by a corporation owned or controlled by the state, if any trade, business, industry, or service, whether to the exclusion, complete or partial, of citizens or otherwise. अब इसमें मतलब बोल रहा है कि कोई ऐसा कानून यदि बनता है जिसमें रिस्ट्रिक्शन भी हो तो वी कैनॉट आई मीन से दैट the fundamental right, that particular fundamental right to carry on trade, occupation or business is being affected. तो इसमें स्पेशल प्रोविजन वही दिया जा रहा है ना फिर। आर्टिकल 19 का क्या बात है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड स्पीच एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन इसको ही पढ़ो, नीचे वाले को पढ़ो, फंडामेंटल बात है जी। मानेगा गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, freedom of speech and expression has no geographical limitation, and it carries with it the right of a citizen to gather information and to exchange thoughts with others, not only in India but abroad also. तभी राहुल गांधी यहाँ पे बकवास कर रहे हैं। हाँ वही बोलने जा रहा था मैं, वही बोलने जा रहा था। Freedom of assembly. This right may be restricted in the interest of public order and sovereignty and integrity of the country. This article has also been reviewed and interpreted by Supreme Court in many times. Freedom of association. चलो, okay. Right to form associations and unions. ये टीके रंगराजन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। हाँ। But does not carry, देखिए, right to form association does not carry the right to strike. Correct. Freedom of movement. The freedom of movement guaranteed by the Constitution, citizens can. The freedom of movement is guaranteed by the Constitution, and citizens can move from one state to another and anywhere within a state. A person free to move from any point to any point within the country's territories. There are certain exceptions, such as scheduled tribe areas and army areas. हाँ ये तो है। अब देखिए इनर लाइन परमिट कहीं कहीं लगता ना सर, इनर लाइन परमिट दैट इज अ रिस्ट्रिक्शन। ऊपर है ना वो गंगटोक से ऊपर जब जाते हैं नाथुला की तरफ हाँ, को, तो वहां पर चाहिए ना, बस इवन अरुणाचल में जाने के लिए चाहिए ना सर? हाँ हाँ वहाँ भी चाहिए सर। मणिपुर से आगे कई इलाके ऐसे हैं जहाँ इनर लाइन परमिट चाहिए। But Majumdar sahab, what does it mean? A person means any person in the sense any person, but it must be a citizen of India. In this particular,
ये 19 में it's applicable only for citizens of India. ओके, खड़क सिंह क्या बोल रहा है? खड़ग सिंह का बोल रहा है watching and shadowing of suspects for the purpose of keeping record of the movement and activities and domiciliary visits. कहाँ कुछ हो रहा है watching and shadowing of suspects? So Mr. Rahul Gandhi is the greatest of suspects because all his present foreign tours that which is taking place in America is being funded by extremists. It's an open secret. And he's speaking all rubbish about the country. फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस, इंडियन सिटीजन, एन इंडियन सिटीजन यहाँ लिख रहा है। हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ these are applicable only in the case of Indian citizens. An Indian citizen is free to reside in any state. ये तो हट Why this an Indian citizen is not mentioned here? यहाँ पे a person क्यों लिख रहा है फिर? ये मैं बोल रहा हूँ। लेकिन सर वो जहाँ तक मुझे मालूम है 19 ये जो है particularly this is only applicable for citizens. ओके, यहाँ तक मुझे मालूम है सर. तो ऊपर क्या लिख रहा है ये? Because protection is afforded against state action in case of ये violation. देखो, ये नहीं, यहाँ यही तो मैं बोल रहा हूँ, ये है All ना citizens ना पहले ही तो मैं तो वही बोल रहा हूँ सर पहले ही all citizens have the right, only citizens. In the other cases we saw that even non-citizens had rights, but in this particular case only citizens have rights. इब्राहिम वजी इंडियन सिटीजन हो गया। इसके बाद में ये क्या है? फ्रीडम, अच्छा, Freedom of trade and occupation. मैं यहाँ का पर्सन हूँ, इस चक्कर में गया होगा ये। ओके, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, ठीक है जी, दिस इज पर जी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज ईच ऑफ सिटीजन टू बी टू डू ट्रेड, ऑक्यूपेशन और बिजनेस एनीवेयर इन द कंट्री एंड, अच्छा, टू डू बिजनेस मींस ट्रेड मींस व्हाट? एनी सॉर्ट ऑफ ट्रेड। No, it can't be illegal ना. Nothing can be illegal. तो आप भी तो सर जानते हैं it cannot be illegal. Nothing, no illegal trade or illicit practice can be adopted no? While carrying out on any trade. अगर इलीगल होगा तो ट्रेड कहाँ से हुआ, बिजनेस कहाँ से हुआ? एनीवे, नहीं, पब्लिक को समझ में आएगा कि ठीक है, वी कैन डू एनी सॉर्ट ऑफ बिजनेस लाइक एनी ट्रेड ना, ऐसा हो जाएगा। It's good that you raised this question. सवाल ये है कि it cannot be a trade of a kind which is illicit for illicit purpose or immoral purpose or which I mean is contravenes any law in force. तो वो तो नहीं होगा सर. सर मुझे काइंडली ये लिंक भेज सकते हैं because these judgments are there so I can elaborate on these later. मैं अभी दे देता हूँ इसको। जी सर, थैंक यू सर. तो कम से कम we have a fairly good idea of what they're trying to say under this article. ये लो, प्राइवेट में आया। जी सर. इसको मैं सेव कर लेता हूँ. इनामदार में बोल रहा है, इनामदार में बोल रहा है एजुकेशन इज एन ऑक्यूपेशन. अब मान लीजिए कोई ट्यूशन पढ़ा रहा है या कोई मतलब क्लासेस खोल रहा है या मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन चला रहा है, be it a school or a college, so he has a right to operate it. ये मेरा सिद्धार्थ कॉलेज का प्रिंसिपल था, आई थिंक। जी जी जी. ये क्या है? पुणे एमसी से क्या है ये? मंत्रालय कॉस्मोपॉलिटन एजुकेशन सोसाइटी, एजुकेशनिस्ट। What he says is appointed as governor, as appointed by government of India, the planning commission और कैसे डॉक्टर पी इनामदार यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये दूसरा है, वो इनका साथ भाई होगा। अच्छा, दूसरे हैं। अच्छा, टाइटल वही है ना इनका, मतलब हाँ, ये भी महाराष्ट्रियन है। हाँ, वो पी इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ, इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या बोल रहा है ये, वर्सेस स्टेट। जी सर, ये पढ़ना ज़रूरी भी है, इसीलिए मुझे लगा कि ये हम लोगों को रखना चाहिए, जानना भी चाहिए इसके बारे में, इसीलिए मैं आपको रिक्वेस्ट किया। ये लो आया, यहाँ पे देखेंगे क्या पूछता है।
नंबर PA दिस इज आर्टिकल Inamdar दिस इज and आर्टिकल others was GG. It is a case decided by a two judge bench of the Supreme Court in which the dispute related to fixation of quota. This is important in respect of an unaided professional institution. let public know that this is a case of Supreme Court where PA Namdar was the petitioner Petitioner, and state of amongst Maharashtra was others. defendant, Uh, and it was in the form of SLP. When SLP is filed and it is admitted, then it is converted to appeal. It is civil appeal because it's a Civil service appeal. matter. That's why it is civil appeal. 5041 ऑफ 2005 की अपील थी. अभी कभी डिसाइड हुआ नीचे मालूम पड़ेगा. और इसमें एरिया ऑफ लॉ क्या बोल रहे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन अफेयर. हाँ, अब पढ़ो. It is a case decided by a two judge bench of the Supreme Court in which the dispute related to the fixation of quota in respect of unaided professional institutions and to the holding of examinations for admission into such colleges. The interpretation put by a five-judge bench in the case of Islamic Academy of Education versus State of Karnataka, उसमें reference there are 2003 S Supreme Court cases, page 697. On the 11-judge bench decision in the case of TMA Pi Foundation versus State of Karnataka, उसमें भी reference there are, was also in question. The two-judge bench decided that the issues raised should be referred to a larger bench for final determination having regard to the nature and the nature of the controversy involved in this case. As an interim measure for the academic year 2004-5 for the state of Karnataka, it was prima facie held in this case that the seats should be filled up by the institutions concerned in the ratio of 50-50, purely as a temporary measure. Interim measure purely as a temporary measure and without prejudice to the contentions of the parties for the purpose of the final disposal. Likewise, interim orders were issued for certain colleges in the state of Maharashtra. इसमें एनालाइज कर रहा है ये केस. Wow. पढ़ो इसको. The अरे urgency पढ़ो to पढ़ो enact पढ़ो पढ़ो. the first amendment to the constitution, even before the formation of the first Lok Sabha in 1952, was significant. The immediate object of the lawmakers was to override the Supreme Court's decision in the state of Madras versus Champakam that the constitution did not intend to protect the interests of backward classes in admissions to educational institutions. The First Amendment thus set forth in unmistakable terms the state's commitment to the promotion of the educational and economic interests of the scheduled castes and the scheduled tribes and other weaker sections, a directive principle enshrined in Article 46. In the Champakam case, the Supreme Court held that a citizen could not be denied admission to the state-maintained or state-aided educational institutions on the ground of religion, caste, race, or language as guaranteed by Article 29, Sub-Article 2. But the language of Clause 4 of Article 15 suggests that the lawmakers sought to give the state a clear mandate, important, to secure the interests of the weaker sections and backward classes in all educational institutions. So that was the basic objective. The Supreme Court judgment in PA Inamdar and others versus State of Maharashtra and others on August 12th threatens to undo the very basis of the First Amendment. The seven-member bench comprising Chief Justice R.C. Lahoti and Justices Y.K. Sabharwal, D.M. Dharmadhikari, Arun Kumar, G.P. Mathur, Tarun Chatterjee, and P.K. Balasubramaniam held unanimously that enforcing the reservation policy of the state on seats in unaided professional institutions constitutes a serious encroachment on the right and autonomy of these institutions. Enforcing the reservation policy of the state, ये भी important है. Enforcing the reservation policy of the state on seats in unaided, मतलब government aid जिनको नहीं मिल रहा है, professional institutions, constitutes a serious encroachment on the right and autonomy of these institutions. मतलब ये private These institutions हैं. private. हाँ हाँ. हाँ हाँ.
The bench held that merely because the state's resources in providing professional education are limited, it cannot force private educational institutions which intend to provide better professional education to make admissions on the basis of its reservation policy to less meritorious candidates. चलिए इसमें तो एक अच्छा मतलब डिसीजन दिया था, and that the judgment would be operative from the next academic year. This was a landmark judgment of the 11th bench decision given by the Supreme Court of India in regards to setting up of educational institutions, along with further other matters in regard to right to education as a fundamental right. One of the leading academicians found flaws in the Pi Foundation case, and soon the Supreme Court was flooded with writ petitions. The decisions had to be broadly discussed and dissected. The bench did not seem to have examined the implications of this ruling in enforcing Article 15 Sub-Article 4. In fact, Article 15 Sub-Article 4 is not even mentioned in the judgment. The reason for this judgment can perhaps be found in the immediate history of the case, which goes back to the verdict delivered by the bench of 11 judges in TMA Pi Foundation case in 2002. The seven-member bench appears to have considered it its duty to interpret the judgment in the TMA Pi case to identify exactly the law laid down in it. Rightly so, because the Supreme Court interprets the law and pronounce as illegal what was not specifically said in the judgment. So there were some ambiguities in the judgment. The petitioners were managements of some unaided professional institutions who were aggrieved with the judgment of the five-member bench, the Islamic Academy of Education and others versus State of Karnataka and others in 2003. In that particular case, that is the Islamic Academy case, the Supreme Court interpreted the TMA Pi judgment as having declared that unaided professional institutions are entitled to autonomy in their administration, and at the same time, they should not forego or discard the principle of merit. This is very important. हाँ ठीक है ना, So, दैट्स मेरिट को मतलब बलि चढ़ाकर किसी का एडमिशन करवाना, that is incorrect. Secondly, it held that in unaided non-minority professional colleges, a certain percentage of seats could be reserved by the management for students who had passed the common entrance test held by itself or by the state university, while the rest of the seats might be filled up on the basis of counseling by the state agency. Thirdly, the bench suggested that unaided professional colleges should also make provisions for students from the poorer and backward sections of the society. It said the government could prescribe the percentage of seats according to local needs, and different percentages could be fixed for minority and non-minority institutions. However, in the PA Inamdar case, the bench held that nowhere in the TMA Pi case judgment it found any justification for the imposing of a seat sharing quota or reservation policy by the state on unaided private professional colleges. The crucial paragraph in the TMA Pi judgment, interpreted differently in the Islamic Academy case and the PA Inamdar case, is paragraph 68. The bench in PA Inamdar case interpreted this paragraph to mean that the management may adopt a policy in line with the reservation policy of the state to cater to the educational needs of the weaker and poorer sections of the society. But it has to be on the basis of voluntary or consensual arrangements which can be reached between unaided private institutions and the state. The bench said that the first part of the paragraph declared the law, while the second part was just an illustration or a suggestion or observation as to how the state may devise a mechanism. So it's only a suggestion to devise a mechanism to take care of the poor and backward sections. As this part cannot be read as law laid down by the bench, it can be enforced only by consent or agreement or persuasion. मतलब जबरदस्ती नहीं होना चाहिए. जहाँ In पे the कड़वा first part लगता है of उसमें मत खाओ, जी सर. जो अच्छा नहीं लगता उसको मत खाओ, ये बोल रहा है वो. हाँ यही बोल रहा है. In the first part of the paragraph 68 of the TMA Pi judgment, the bench said that the university government at the time of granting recognition to a private unaided institution can require to provide for merit-based selection
while at the same time giving the management sufficient discretion in admitting students. This, it said, could be done through various methods. The methods are not specified. In the second part of the paragraph, the bench suggested that, for instance, a certain percentage of seats can be reserved for the management for the admission of students from amongst those who have passed the common entrance test तो हाउ held विल by दे itself. प्रिपेयर, हाउ विल दे प्रिपेयर लिस्ट, मेरिट लिस्ट कैसे बनाएंगे वो लोग? वही तो मैं पूछ रहा था कि what are the methods which would be employed. Suppose a minority institution is there which is not aided, and it is run by the donation of that community or whatever it is, and a person of that community is a student of that community is having 50% marks, and a person of not belonging to that community is having 90% marks, तो उसको 90% वाले को मना कर देंगे ये लोग? मना तो करना नहीं चाहिए ना. बोल रहे हैं इंसिडेंटली टेक केयर ऑफ पुअर एंड बैकवर्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. व्हाट वुड बी द क्राइटेरिया? कितने लेंगे? सपोज अगर एक क्लास में 50 बच्चे नहीं, हैं, देखिए, it added that the government could fix different percentages for minority and non-minority institutions. ये कर दिया ना. decision is left on the government, ना? हाँ, government. But that is also unfair. But this should be applicable throughout India, ना. A particular state may have its own particular एक percentage जगह तो fixed. बोल रहा है कि वो खुद डिसाइड करेगा, एक जगह बोल रहा है गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस लेकर के आ रहा है. So ambiguity is there, ना. It is clear that the bench of Islamically read the paragraph as a whole, while that in PN Amdar case read the two parts in isolation. Two parts in isolation. It is ironical that such a minor disagreement on what a paragraph in an earlier judgment meant has resulted in the undoing of momentous constitutional amendment aimed at achieving this. क्या बोल रहा है? नहीं, सबसे ज्यादा गड़बड़ ये है सर कि मेरिट, एक जगह बोल रहा है मेरिट शुड बी कंसिडर्ड फर्स्ट, उसके बाद then only the other people can be inducted after they pass the common admission test. लेकिन फिर इसमें वो बोल रहा है कि reservation should be constituted as reasonable restriction or not. याद रहो, देशमुख की जो यूनिवर्सिटी है वो इंजीनियरिंग कॉलेज है, राजीव गांधी इंजीनियरिंग कॉलेज जो है वर्सोवा में, बंबई में, वो प्राइवेट है. तो वहां पर जो अगर मतलब अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज है तो वहां पर सारे अप्लाई करते हैं, और जितने भी मेरिटिशियस स्टूडेंट्स हैं अगर वही अप्लाई करेंगे तो कोई माइनॉरिटी वाला तो पाएगा ही. जो इनका जो है प्राइवेट वाले मतलब मिलेगा ही उनको. तो देयर हैज टू बी सम कोटा, मैनेजमेंट कोटा होगा. हाँ, कोटा होगा, या स्टेट बताएंगे कि इतना आपको परसेंटेज ये माइनॉरिटी वाले को रखना है, इतना मेरिट पे लेना है. माइनॉरिटी हो मेजॉरिटी हो जो भी है, मेरिट पे लेना है, ये हो सकता है. yardstick could be such कि state will give a direction or a guideline. इसके अलावा और तो कोई रास्ता नहीं है. क्या बोल रहे? The root of this judicial aberration, अच्छा रहेगा इसमें, this judicial aberration perhaps lie in the philosophy of Supreme Court as it evolved in the TMA by judgment, which considered the right to establish and manage an educational institution as a fundamental right. As a fundamental right. Okay, for the non-minorities. Okay, that is okay. वो तुम business के लिए कर सकते हो. आगे क्या? Under Article 30 of the minorities. Okay, as a corollary, the Supreme Court examined whether reservation of seats in such institution could be construed as a reasonable restriction. Okay, in Amdar case, the bench held that such appropriation of seat cannot be held to be a regulatory measure in the interest of matter within the meaning of Article 31 or a reasonable restriction within the meaning of this. A bad session which in the eyes of political class calls for suitable legislative remedies. Calls for तो घुमाकर फिर स्टेट के हाथ में दे रहा है ना. Calls for suitable legislative remedies. Now legislation will mean that the assembly of the state will have to take care of. पहले ही बोल दो ना, इंटरटेन करने से पहले बकवास क्यों करते हो? बोलो जाके कि लेजिस्लेचर पे जाओ. उसमें सबसे बुरा चीज ये है कि none of the judgments are very clear in their language. कि क्या होना चाहिए, clear cut black and white नहीं है. There are many gray areas which people exploit later on. क्यों गलत बोल रहा हूँ सर? Yes.
क्या तमाशा है। अच्छा, एक मैं सवाल पूछ रहा था, चाह रहा था, कई दिन से सवाल आ रहा था, मैं मिस कर जाता था, पूछूं? जी सर। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, मेरे को अभी तक उसका जवाब नहीं मिला। मैंने अपना कॉलेज में भी पूछा था। सपोज a Supreme Court bench of 5 judges gives a judgment जी। and all anonymous judgment means 5-0. हाँ हाँ। Okay. All five Then, of them agree. They're on the same footing. then They the agree. matter after some time the matter is referred, and the Supreme Court referred this case to higher bench, seven judges bench में चला जाता सेवन है। नाइन जो भी हो, हाँ। हाँ, ना और सेवन, हाँ। फाइव होने से सेवन। वहां करेक्ट पर सर। वहां पर 6 जो है वो पहले 6:1 पहले वाले को उड़ा देते हैं, पहले वाले जजमेंट को उड़ा देते हैं। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जी। होगा, पहले वाला जो जजमेंट है वो उड़ गया, मतलब पहले वाला हाँ तो जजमेंट पूरा पूरा खत्म हो गया मामला। खत्म हो गया। अब आ जाओ, अगर 7 जजेस की बेंच है और उन्होंने एक जजमेंट दिया 5-2, 5-2। 5-2 ठीक दिया, है। 7 जजेस थी, ठीक है। एक फिर भी मैटर मेजोरिटी, हाँ, 5-2 था। द मेजोरिटी, द ठीक है, डिसीजन ऑफ द मेजोरिटी विल हाँ। प्रिवेल। हाँ जी। Now, after some time, this matter is referred to a 9 judges bench. जी। There, there, the judgment of 7 judge bench is overruled by 6-3. Then what happens? That overall rule will operate ना। No, no, समझ रहे? मैं बोल रहा हूँ कि 7 जजमेंट में 5-2 था, 5-2 था। हाँ ओके, ठीक है, तो आप 6-3 बोल आगे रहे हो ना चलो, फिर। आगे चलो। जब 9 का बनाया तो उसमें हाँ, उन्होंने क्या किया, इसको ओवररूल किया, पूरा ओवर रूल कर दिया। हाँ। 5-5-4 कर दिया इसको। तो 5 तो जज पहले भी थे, 7 वाले में हाँ 5 ठीक जज है, थे फेवर में, पहले थे तो 6 और बोल रहे हो ना आप फिर। 9 वाले में 5 जजेस अगेंस्ट हो गए। तो नहीं है तो जजेस ही वो। नहीं नहीं, हैं जजेस, बट दे आर नॉट द सेम सेट ऑफ जजेस। दे मे इंटरप्रेट द लॉ डिफरेंटली। तो मैं वही इस बात को सोच रहा था कि इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल इंडिविजुअल कैपेसिटी ऑफ द पर्सन। जज टू इंटरप्रीट हाँ, द लॉ। इंडिविजुअल जज। हाँ, वो कैसे अपना यही तो मैं बोल रहा हूँ सर। दिमाग बना सो के आता है और क्या करता है क्या नहीं करता है। तो मैं ये बोल रहा हूं कि भाई, दुनिया भर की नौटंकी क्यों करते हो? जब जब कोई चीज बनती है, लॉ बनता है पार्लियामेंट में, तो पता नहीं कहां कहां से उसका मतलब उनमें मांगा जाता है, सजेशन मांगा जाता है। पता नहीं कितने लोग बैठते हैं उसको डिसाइड करने के लिए। फिर बाद में जो रिटायर्ड जजेज होते हैं उनको भी बिठाते हैं, लॉ कमीशन से भी रिपोर्ट बिल्कुल मंगाते हैं, बिल्कुल, वहां पर हाँ, भी लॉ हाईकोर्ट के कमीशन जजेज का होते भी हैं। पूरा रिकमेंडेशन रहता ही है उसमें। बिल्कुल। फिर उसके बाद में वो इनके पास आता है, फिर ऊपर जाता है प्रिविलेज कब कब, जब पार्लियामेंट कमेटी को जाता है, वो लोग अपना मत्ता फोड़ते हैं, और फिर जाकर के पार्लियामेंट में डिस्कशन होता है। तो इंस्टेड ऑफ अटरिंग इवन सिंगल सेंटेंस ऑन सम कंटेंशियस इश्यूज, व्हाई द हेल यू आर वेस्टिंग पब्लिक मनी? 7 जज बना देना है, 9 जज बना देना है, 15 जज बना देना है, ये क्या मतलब होता है? सर यही तो दिक्कत है हमारे सुप्रीम कोर्ट का। No, there's no person to question them unless the state frames another law to circumvent. Pardon me for using that word. Only if the state can frame a separate law to circumvent the Supreme Court's decision, then only one can do something regarding that. नहीं तो ये तो ओवरऑल तो करते ही रहते हैं बीच बीच में। आपका क्वेश्चन वैलिड है एकदम कि 100 लोग मान लीजिए, इट वेंट थ्रू अ लॉन्ग प्रोसेस। कोई एक लेवल पे तो डिसीजन हुआ नहीं है लॉ फ्रेम करने के पहले, बिफोर एन तो एनैक्टमेंट। मेरा मेरा कहने का मतलब तो यही है तो कि इफ तो ए लॉ बाकी इज बेवकूफ हैं 100 लोग। if law is made by assembly or parliament for that matter, then they should not strike down the law, they should refer, they should give some रेफर इट observation बैक। तो दोबारा से इसको रेफर इट बैक। Now, instead of doing that, in the garb of interpreting, with due respect to the Supreme Court, in the garb of interpreting, it so happens that a law is struck down as ultra vires straight away often.
होता ही है ये। अभी जो 124 कैपिटल ए है, सेडिशन का जो कह रहे हैं ना, सेडिशन जी जी देशद्रोह का, जी जी उसके जी। बारे में सुप्रीम कोर्ट ने शायद वो लगा दिया था, ब्रेक लगा दिया कि नहीं, कोई भी मतलब कुछ भी कर सकता है, यू कैन नॉट अप्लाई सेडिशन लॉ। नहीं, तब तो फिर वही होगा कि देयर बी केओस ऑल सुनो ओवर। तो, जब नवनीत राणा अमरावती जो है ना, जो हनुमान चालीसा पढ़ रही थी जी बाल जी ठकरे जी घर के जी सामने, जी जब वो जी सुप्रीम जी कोर्ट जी। में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को कि भाई यू कैन नॉट अप्लाई 124 ए, और केस खत्म कर दिया उन लोगों ने। तो वहां पे गवर्नमेंट ने क्या बोला कि साहब इसको ब्लैंकेट खत्म मत करो, वी हैव और रेफर्ड वही दिस मैं बोलने मैटर जा रहा टू। हूँ, ब्लैंकेट खत्म करना बहुत ही गलत चीज है। हाँ, ब्लैंकेट तो खत्म करने से देश में तो कोई कानून रहेगा ही नहीं फिर। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि वी हैव रेफर्ड दिस मैटर टू लॉ कमीशन इन 2016। Let us wait for the recommendations of the commission. We will वो examine them. रिकमेंडेशन आ गई कल। उनने तो हाँ क्या तो बोला कि 3 साल की जगह 7 साल सजा कर दी है, लाइफ को तो रखा ही रखा है। और ये कौन सा तो जज है, जो 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 लॉ कमीशन का चेयरमैन है, ही जज ऑफ जी। कर्नाटका, चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका, हु हैज डिलीवर्ड द जजमेंट इन बुरका केस। अच्छा अच्छा। अवस्थी साहब है ना, ऋतुराज अवस्थी, हाँ 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 हाँ। उन्होंने रिपोर्ट दिया। कल मैं पढ़ रहा था, तभी मैं उसको पूरा पूरा जब पढ़ा तो मैंने कहा ठीक है, अगर मौका मिलेगा तो मजूमदार साहब से पूछे ये चक्कर क्या है, ये कुछ भी कर देते हैं, सर मैं 5 वाला कुछ कर देता है, 7 वाला कुछ कर देता है। 5 वाले ने तो एक जजमेंट दिया, मैं तो सात सर वाले ने साफ आंसर आपको दिया। डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल इज सिटिंग एंड अंडर द garb of, I mean, interpreting the law, certain things which are not in the interests of the society at large are often maybe mistakenly imposed. ये मेरा राय है सर, मेरा निजी राय है। आई मे बी रॉन्ग, but with due respect to the Supreme Court, one has to bow down let us, before them. let us come back to this, that means what PA Namdar says is that education is a right, isn't it? आपको है ना, जी, यहाँ एक लाइन देखिए, प्रोफेशनल एजुकेशन शुड be एक made accessible on the criterion of merit and non-exploitative terms to all eligible students on uniform basis. अच्छा, इसको पूरा ही पढ़ता हूँ. This case holds a very important place in the history of reservation. The suggestion made on behalf of minorities and non-minorities that the same purpose for which committees have been set up can be achieved by post-audit or checks after the institutions have adopted their own admission procedure and fee structure. Now, who will do this post-audit and checks? This is an important question. Is unacceptable for the reasons shown by the experience of the educational authorities of various states. Unless the admission procedure and fixation of fees is regulated and controlled at the initial stage, the evil of unfair practice of granting admission on available seats guided by the paying capacity of the candidates would be impossible to curb. ये ठीक है, मैं मानता हूँ. This is very good. Non-minority unaided institutions can also be subjected to similar restrictions, which are found reasonable. देखिए, which are found reasonable. Reasonable is a very wide a word having a very wide connotation. What is reasonable in my eyes may not be reasonable in your eyes, and in the interests of the रीजनेबल इन student द आइज ऑफ द community. मैनेजमेंट की बात कर रहा होगा लगता है ना, उनको तो जो वही चाहिए बोल वो। रहा हूँ ना मैं. हाँ तो professional education should be made accessible on the criterion of merit. I agree with this, and on non exploitative terms to all eligible students on a uniform basis. तो हमारे यहाँ सर लोग इसीलिए डरे हुए रहते हैं ना. मान लीजिए कोई एक पर्टिकुलर चीज चल रहा है, फिर कोई किसी को पता चलता रहे ये तो कोर्ट गया, हाई कोर्ट गया, फिर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो जब तक डिसीजन नहीं आता है, दैट पर्सन इज हैंगिंग इन टेदर हुक्स. उसका मतलब देयर इज अ sword of Damocles hanging over his head. कभी कभी भी कुछ भी हो सकता है. He might be excluded or included. So why this ambiguity? We can always ask ourselves these questions. Na? Why this ambiguity? Why leave any scope for ambiguity in the first place? जो आपका primary question था.
सर आपका तो प्राइमरी क्वेश्चन यही था ना, आफ्टर a law is enacted by on the basis of a procedure where there are several layers, it crosses several hurdles, several layers, it is examined by a plethora of academicians, jurists, whatever, जो भी हो, हाँ, parliamentarians, सब कुछ करने के बाद then Supreme Court suddenly or the High Court suddenly overturns the law. The entire exercise becomes futile, ना? हम्म। अरे मैं तो शुरू से ही बोल रहा हूँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हैं लोग, मतलब अब क्या तो बताएं, जाने दो, उसके बारे में ज्यादा बोलना ही नहीं है, ठीक है। नहीं, मैं तो क्या बोलूं सर, वी कैन ऑलवेज से विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द कोर्ट्स, और क्या बोलूं, बिकॉज द जजेस, honorable judges in their wisdom will interpret the law according to their interpretation, where we are unable to do be of any assistance whatsoever other than arguing before the court, or kuch nahi. Beyond that we have no other authority. ये 19(1)(a) पे है। हाँ, ये impounding of the passport. 19(1)(a) क्या है? नाइनटीन वन ए Procedure cannot be arbitrary, फ्रीडम unfair, ऑफ oppressive. स्पीच एंड एक्सप्रेशन ना, इसमें है ये। हाँ ओके, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर है। पढ़ो तो थोड़ा सा, हाँ गोपालन को ओवररूल किया है इसमें। हाँ हाँ. Manika Gandhi versus Union of India, AIR 1978, Supreme Court, page 597, was a landmark decision of the Supreme Court of India in which the court significantly expanded the interpretation of Article 21 of the Constitution of India. It overruled A.K. Gopalan versus State of Madras, which had implied the exclusiveness of fundamental rights and established a relationship between Articles 14, 19, and 21 of the Constitution, known as the Golden Triangle or Trinity, holding that a law depriving a person of personal liberty must not violate any of them. Once again overruling A.K. Gopalan, the court in this case held that a procedure under Article 21 of the Constitution cannot be arbitrary, unfair, oppressive, or unreasonable. The decision had a significant influence on the Indian constitutional law and has been described as the moment when the Supreme Court of India rejected 3 decades of formalist interpretation and inaugurated a new path where courts could expand the rights of individuals against the state instead of limiting or contracting them. तो चार बैकग्राउंड भी बात जरूरी है. 14 से लेकर के 21 तक चले गए, राइट टू लाइफ तक चले गए फिर उसमें। हाँ हाँ हाँ. तो instead of limiting or contracting them, the courts should expand the rights of individuals. जब तक सर आते नहीं है, मैं थोड़ा अपना बताऊं. द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स पर्सनल लिबर्टी came up for interpretation before the Supreme Court for the first time in A.K. Gopalan versus Union of India, which we have cited here. So, in that case, the court gave a restrictive interpretation of the expression personal liberty to mean only relating to liberty relating to or concerning a person or a body of the individual. Because in Khadak Singh versus State of Punjab, which is another case of 1963, the term personal liberty was interpreted by the Supreme Court to be a compendious term, including within itself all varieties of rights which go to make up the personal liberty of a man other than those dealt with in Article 19(1).
In other words, Article 19.1 deals with particular species or attributes of that freedom, and personal liberty in Article 21 takes in and comprises the residue. But later in this Maneka Gandhi case, the Supreme Court gave a new dimension to the Article 21. It held that the right to live is not merely confined to physical existence of a person, but it includes within its ambit the right to live with human dignity. So, so the background is that Maneka Gandhi's passport was impounded in public interest by an order dated 2nd of July 1977. The reasons for When the reasons for impounding a passport were sought, the government of India declined to provide any reason in the interests of the general public. Now, this is a very loose term, a blanket term. In the interests of general public, without explaining what those interests are, the government of India declined to provide any reason. That is why it has been said that the Supreme Court gave a new dimension, that the right to live is not, or the right to personal liberty is not merely confined to one's existence or that particular right, but there must be a dignity involved in that also. And the government can't give, I mean, sort of take any action on any person under the garb of stating that it's in the interests of the general public. So rightly, Article 19.1 deals with a particular species or attributes of that freedom, that is personal liberty. Sorry for interruption. No problem at all, sir. Filling up the gaps with my own interpretation and discourse. So, Maneka Gandhi filed a writ petition directly in the Supreme Court under Article 32 of the Constitution of India, challenging the order on the grounds that it violated Article 14, 19, and 21 of the Constitution. The Union, which means the Government of India, responded in their written submissions that a passport was impounded because a presence was likely to be required in connection with legal proceedings before a commission of inquiry. Now, Justice P.N. Bhagwati delivered a judgment for a plurality of the court, writing for himself and Justices Untwalia and Fazal Ali. Chief Justice Beg, Justice Chandrachud, and Justice Krishna wrote separate judgments concurring with the plurality. Justice Kailasam wrote a dissenting opinion. The court did not pass an order on the specific matter of Maneka Gandhi's passport. It was of the view that the statements made by the Attorney General that the Government of India is agreeable to consider any representation that may be made by the petitioner in respect of impounding a passport would be considered, and it is not necessary to formally interfere with the impugned order. इतने लोग बैठ करके भी ठीक है. Initially बोला गया था कि in the interests of general public. Now this is, as I said, is a very blanket or a vague way of, defending oneself. When the reasons for impounding a passport were sought, the government of India declined to provide any reason, stating that it's in the interests of the general public. तभी तो court गई. Then the government, in their written submission, stated that
it is likely that she may be required in legal proceedings before a commission of inquiry. अब जजमेंट में लास्टली देखिए जनरल चीज आ रहा है. So yeah, हाँ इसमें बोल रहा है देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 14, 19, 1A and 20 पर्सनल लिबर्टी whether right to go abroad is a part of personal liberty whether a law which complies with article 21 has still to meet the challenge of article 19 nature and ambit of article 14 judging validity with reference to direct and inevitable effect whether the right under article 19(1)(a) has any geographical limitation. And it also considers the Passports Act of 1967, sections 3, 5, 6, 10, subsection 3C, 10, 5, whether section 10, subsection 3C is violative of articles 14, 19. So we consider correct. And grounds for refusing to grant passport, whether the power to impound passport is arbitrary in general public interest, if that is vague or not, that contention is vague or not. Then principles of natural justice, whether it applies only to quasi-judicial orders or applies to administrative orders affecting rights of citizens, whether statute is silent or can be implied, whether duty to act judicially can be spelled out in urgent cases, whether principles of natural justice can apply. इसमें देखते हैं सर लास्टली क्या बताएगा. ये हेड नोट में जो है वो तो हम लोग पढ़ चुके हैं because the government refused to give proper reasons and later on stated that in the interests of the government because the impugned order could not consistently with articles 19(1)(a) and G be passed on the mere formation of the central government, mere information on a mere information of the central government that the presence of the petitioner is likely to be required in connection with the proceedings before the commission of inquiry. हाँ इसमें एक हो चीज गया बता ना रहा है. नेचुरल जस्टिस. हाँ 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 ये बेसमेंट का लाइट ऑन कर देखना है. हाँ एक चीज और बढ़िया बता रहा है. In an order that a passport may be impounded under section 10(3)(c), public interest must actually exist and there should be likelihood of public interest arising in future, and that there would be likelihood of public interest arising in future would be no ground for impounding the passport. It was not correct to say that the petitioner was likely to be required for giving evidence before the Shah Commission. The right to travel and to go outside the country is included in the right. कंक्लूड करो, मैं तो थोड़ा बिजी हूँ, मेरे को कुछ काम करना है. जी सर. मेरा गांधी खत्म कर दो फिर बंद कर दो, ठीक है? जी सर इसको आगे रखते हैं फिर इसको. तो लास्टली इसमें यही बताया जा रहा है कि पर्सनल लिबर्टी or the right to move, right to live cannot be merely confined within a narrow scope. Okay. Within a narrow scope and ambit. One cannot have a pedantic approach. यही बोल रहे हैं, a narrow approach to things. So we'll discuss in next scheme. इसको आगे करते हैं फिर से. very important, बहुत important है. Sure sir. Sure sir. Okay, चलो बाद में मिलते हैं. जय हिंद, वंदे मातरम सर. भारत माता की जय.